My dear students, on the basis of given video, today I am going to explain some important topics of physics related class 9. Topics is force and laws of motion. थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान देना. फिजिक्स में सबसे पहला टर्म है नेट फोर्स. नेट फोर्स. Net force is also known as resultant force. So net force and resultant force both are same term. According to vector physics, if two or more than two forces acting on a body at a same time at a same point, if more than two forces acting on a body at a same time at a same point, here first force F1, second force F2, third force F3, force F4, all the given forces acting on a body, then vector sum of all the forces. Vector sum means algebraic sum. F1 add F2 add F3 add F4 gives the value of resultant force. So, if two or more than two forces acting on a body at a same time at a same point, then vector या algebraic sum of all the forces acting on given body, that's called net या resultant force. Suppose value of F1 is 10 Newton, value of F2 is equal to 5 Newton, value of F3 is equal to 8 Newton, value of F4 that's equal to 7 Newton. Then net force या resultant force will be equal to F1 according to sign convention. Sign of F1 is positive plus 10 Newton. Add F2 according to sign convention. Sign of F2 is also positive 5 Newton. Sign of F3 is negative minus 8 Newton and minus 7 Newton, because sign of F4 is also negative. Here net या resultant force that's equal to 50 Newton minus 50 Newton that's equal to 0. Here two or more than two forces acting on a body, but net force is equal to 0. So, if more than two forces acting on a body at the same time, then according to given process, we can find the amount of net force. Next step, in this chapter, second chapter of physics rated class 9, scientist Newton gives his important law. That law known as law of motion. According to Newton's first law of motion,
first law of motion. If net या resultant force acting on a body is equal to 0, थोड़ा सा कंसीडर करेंगे यहाँ पर किसी बॉडी in given figure we have given a sphere, suppose value of net force acting on given a sphere is equal to 0, then according to Newton's first law of motion, in this case there is no any type of acceleration created in body. Here value of acceleration is also equal to 0. तो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बतलाया कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स यदि 0 होगा, then no any type of acceleration created in body. इस बॉडी में किसी तरह का कोई एक्सेलेरेशन क्रिएट नहीं होगा, बॉडी एक्सीलरेट नहीं करेगा. It means any types of body have a tendency to maintain its initial position. किसी भी बॉडी में अपने इनिशियल पोजीशन को मेंटेन करने की एबिलिटी होती है. Any types of body have a tendency to maintain its initial position. That tendency of body, that's called inertia. So Newton's first law of motion is also known as law of inertia. In his second law, according to Newton's second law of motion, Newton's first law, Newton's according to first law of motion, if net forces is equal to 0, then amount of acceleration created in body will be also 0. It means no any types of acceleration created. But in his second law, according to Newton's second law of motion, Newton's second law of motion, if net या resultant force acting on a body is not equal to 0, अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स का अमाउंट यदि 0 नहीं हो, शून्य नहीं हो, then in this case in direction of force, अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू अगर 0 नहीं होता है, then in this special case in direction of force and acceleration creating body. न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में बतलाया कि यदि एफ का वैल्यू, किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू यदि 0 नहीं है, शून्य नहीं है, तो फोर्स के डायरेक्शन में ही, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस बॉडी में एक एक्सीलरेशन क्रिएट होगा, और वह जो एक्सीलरेशन होगा, the amount of acceleration created in body will be directly proportional to value of force. ध्यान दें, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, that law can be converted into mainly 3 parts. According to first part, if net force is not equal to 0, then in direction of force an acceleration created in body, and that acceleration will be directly proportional to value of force. कहने मतलब कि एक्सेलरेशन जो क्रिएट होगा वह फोर्स के डायरेक्शन में होगा, और एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि मोर वैल्यू ऑफ फोर्स मोर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, लेस वैल्यू ऑफ फोर्स लेस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन.
किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू जितना ही अधिक होगा, अगर फोर्स के वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे तो एक्सीलरेशन इंक्रीज करेगा, अगर फोर्स के वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो एक्सीलरेशन डिक्रीज करेगा। इन लास्ट स्टेप, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन क्रिएट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। यहाँ पर न्यूटन ने बताया है कि जो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा उसका जो रिलेशन होगा मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। तो देयर इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन प्रेजेंट बिटवीन एक्सीलरेशन एंड मास ऑफ बॉडी। ऑन द बेसिस ऑफ बोथ इक्वेशन वी सी दैट produced acceleration on body that will be directly proportional to F and inversely proportional to M. So A is equal to a constant multiply F by M. Here K is a constant in SI system. Value of K is equal to 1. So amount of acceleration that will equal to F by M. It means value of force that will be equal to mass of body multiply create acceleration. So according to Newton's second law of motion, we find a relation between force, mass and acceleration. That's all.